हॉट हैचबैक, परफॉर्मेंस हैचबैक या रेसी हैचबैक जो मास मार्केट सेगमेंट है, अगर किसी गाड़ी ने बखूबी निभाया है पिछले 10 सालों में, ये पोलो। अब देखिए पोलो का टाइम हो चुका है, जाने को है, बट जाते जाते Volkswagen इंडिया ने हमको एक तोहफा दिया है, पोलो लेजेंड एडिशन। अगर आप अभी भी पोलो फैन हैं, आपको लास्ट मॉडल नहीं मिला, आपको यू वांट टू गेट अ पोलो, दिस इज द लास्ट चांस। बट आज के वीडियो में ऑब्वियसली पोलो के लिए थोड़ी बात करेंगे, पोलो लेजेंड एडिशन को लेके, बट क्वेश्चंस विल बी रिगार्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन, क्वेश्चन विल बी रिगार्डिंग रोड मैप क्या होना चाहिए, और जो ग्लोबल पोलो है वो इंडिया में आ सकती है या नहीं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रांड डायरेक्टर Volkswagen इंडिया आशीष गुप्ता। आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक, मैं हूं अनिल पांडे। वेरी इंपॉर्टेंट वॉज कि हम 12 साल से पोलो इंडिया में हैं, और अगर मैं ये कहना कम नहीं होगा कि, और ये कहना गलत नहीं होगा, मैं कहूँगा कि पोलो ने Volkswagen ब्रांड को डिफाइन किया इंडिया में। अगर आज मैं किसी कस्टमर से पूछता हूँ Volkswagen क्या है, तो पहला नाम पोलो आता है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हम अगर इस गाड़ी को सनसेट की तरफ भेज रहे हैं, या इस जनरेशन ऑफ पोलो को सनसेट की तरफ भेज रहे हैं, तो उसको एक सेलिब्रेशन की तरह दिया जाए, बिकॉज इट दैट दिस कार डिजर्व्स। पोलो ने जो प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट है उसको डिफाइन किया, उसको बर्थ किया, उसको शेप किया है इंडिया में, और आज हम देख रहे हैं बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स उस सेगमेंट में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए एज अ टीम, और आई थिंक जो हमारे 3 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स हैं पोलो, उनके लिए इसको एक सेलिब्रेटरी फीलिंग दी जाए। इसके कारण हमने जो लास्ट 700 पोलो के जो बैच है उसको लेजेंड एडिशन का नाम दिया है। लेजेंड एडिशन जो बेस कार है वो GT SI है, जो कि एक और बहुत मच लव्ड कार लाइन है, तो उस पे बेस हमने ये लास्ट 700 गाड़ियाँ लेजेंड एडिशन। देखिए पोलो का अगर मैं न्यू जनरेशन पोलो की बात करूँ, पोलो एज अ नेम बैज इज नॉट गॉन आउट ऑफ प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड. It's a question of whether we can actually bring the new generation Polo to India or not in a business sense case of kind of way, both for us and for customers. With the kind of regulatory framework that we have around that segment right now, bringing the new generation Polo into India will not make a strong case for the customers at the price points we will be forced to introduce it as. So it's unfortunate, it's sad for me as well to be saying goodbye to the generation of the Polo. But I would like to believe, never say never, in 2 or 3 years, the regulation changes, the conditions become better. Why not? Because the MQB A0 iron platform also underpins the global new Polo as well. So it's definitely a possibility. It's a question of timing, and it's a question of the environment around it. देखिए ऐसा है कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट आर वी प्लानिंग और व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू एज अ ब्रांड इन इंडिया. आई थिंक हमारी पोजीशनिंग बड़ी क्लियर है दैट वी वांट टू बी अ प्रीमियम एस्पिरेशनल ब्रांड. When I say premium, it does not only mean in terms of, or it does not mean only in terms of price. It means in terms of how do customers perceive our cars? Do they see our cars with the latest technology in them? Do they see that we are bringing global powertrains into the country? Do they see that we are bringing global safety technology into the cars? That is the kind of positioning that we are trying to achieve, and I think we have been fairly successful with the launch of the Taigun, which has been a very loud product. The numbers speak for themselves. The kind of accolades the Taigun has picked up, with over 20 awards, with so many awards declaring it the car of the year. So I think customers can clearly see that Volkswagen's legacy of the Polo is now being upgraded with the new platform that we have brought in, and that's a natural progression for the brand, I would say. We have over 3 lakh customers of the Polo in India. We have similar or almost 1 lakh customers of the Vento sitting in India. So it's a natural progression for them with the brand as well to be able to upgrade to a Taigun or the upcoming quarters. जी देखिए, हम तो पूरा रेडी हैं, गाड़ी तैयार है, हमने ऑलरेडी स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन कर दिया है. लास्ट वीक वी हैड द स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कार इज वेल. तो गाड़ियां बननी शुरू हो गई हैं, हम तो पूरी तरह तैयार है, हमारे डीलरशिप्स पूरी तरह तैयार है. अगर इस सेगमेंट को देखा जाए, और ये मैंने पहले भी कहा है, ऐसा नहीं है कि सेडान्स का फैशन चला गया या सेडान्स का प्यार चला गया. इट्स अबाउट क्या ऑप्शंस अवेलेबल थे कस्टमर. फॉर मेनी ईयर्स देयर हैव बीन ओनली 1 or 2 ऑप्शंस इन दैट सेगमेंट, एंड आई थिंक द सेगमेंट वाज राइट for some exciting product to come in, and I'm sure, and I can already see it happening, that this segment will almost double with the introduction of the Virtus.
ग्लोबली आपको पता है कि हमारा ब्रांड इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ लीड ले चुका है और हमारा स्टेटेड गोल है कि हम इलेक्ट्रिफिकेशन में बहुत फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं. सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ what choices do you make, what makes sense going 10 years down the line. Let's not see only 2 or 3 years. So these are discussions which are internally happening right now, that what is the right direction for the brand. I think for the next 3 years we are very clear that हमारे पास Virtus है, हमारे पास Taigun है, we have the Tiguan in the market, and we will also bring in some more premium production to the market to position ourselves and to become strong for the eventual transformation that has to happen. Right, so that is what I would like to believe, that we would like to transform directly into the next generation, which is coming very fast. जी देखिए, हम लोग अपनी तरफ से पोलो कप चलाते थे, which our motorsports division used to run, but since the car itself is end of production, so we will be phasing out the Polo Cup by the end of this year. But the cars which have been made for the racing are available for customers to buy and race on their own. Our motorsports division will continue to support customers with any support they need, parts or in service or in building cars. That will surely continue.